So Soumya, good evening, Tanishka. Very good evening. It's a festive season, right? Diwali is near, but I would like you to study till Choti Diwali. Choti Diwali से पहले तक भी you can study, and then 4 days you can take the break. I mean, classes तो आपकी चलेंगी, ऐसा नहीं क्लासेस नहीं चलेंगी, क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी. देखिए आपका 1 day हॉलीडे है, बट दैट इज जो आपका मेन दिवाली जो होता है, विच यू कॉल इट एज बड़ी दिवाली. अगर कुछ भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, दैट इज डिफरेंट. हम यहाँ पे बोलते हैं मेन दिवाली, या फिर जो भी आपकी दिवाली है, उस दिन आपका मेनली ऑफ रहेगा. बट अगर बाय चांस आप लोग नहीं देख पा रहे हैं कुछ लेक्चर्स बिकॉज यू हैव टू सेलिब्रेट, या फिर आपके कुछ प्लान्स हैं, तो देन यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाद में, ठीक है, पर उसको देख लीजिएगा. और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर आना है, लाइव लेक्चर देखना है, तो वो भी वो कर सकते हैं, इफ यू कैन टेक 2 hours का टाइम आउट ऑफ योर शेड्यूल, ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल नॉट गिव असाइनमेंट्स एटलीस्ट 4 days. मैं सिर्फ आपको दिवाली योर दिस थिंग, व्हाट इज द डेट, 20 को है ना आपका, 20 को है, तो फिर 20, अच्छा आपका तो 17, कल, आज और कल और होगा आपका, आज वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक, ठीक है. फ्राइडे को तक आई विल गिव 2-3 असाइनमेंट्स आपको मैं दूंगी, और उस टाइम पे मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दूंगी, ठीक है. सो इट विल बी जस्ट लाइक दैट. सो एंजॉय इट वेल. ऐसे मत करना, बिकॉज taking rest and enjoying with your family and festive season is very important apart from the studies. Okay, all right. कहाँ पे थे हम लोग? आइलैंड्स पे थे, ठीक है. आइलैंड्स वी हैव टू स्टार्ट. कोस्टल प्लेन्स वगैरह हमने कर लिया था, ठीक है. ओके, डन. राइट डाउन अबाउट इंडियन आइलैंड्स. राइट डाउन इंडियन आइलैंड्स. इंडियन आइलैंड. राइट डाउन अबाउट इंडियन आइलैंड्स. राइट डाउन. Right on. India has total of 615 islands. On Saturday, I will give. आपको मैंने सारे टेस्ट पेपर दे दिए ना, आपके चेक करके. ईशान, ध्रुव, आपके टेस्ट पेपर सैटरडे तक you will get this Saturday. ये सैटरडे को हमारा भी शायद हो सकता है छोटा सा फेस्टिव कोई फंक्शन वगैरह हो, so I cannot assure, but before that अगर हो पाया तो I will do that. ठीक है. Okay. ना राइट. नहीं, वो वही वाले जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए थे, जो मैंने आपको क्लास में आपके चेक करे ना, उन्होंने मुझे मेल किए थे, उनकी बात कर रही हूँ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं, मतलब दे हैव नॉट गॉट द रिवर्ट. ओके. इंडिया हैज टोटल ऑफ 615 आइलैंड्स. इंडिया हैज टोटल 115 islands, comma, of which 572 of which 572 lie in the Bay of Bengal. Lie in the Bay of Bengal. And remaining 43 lie in Arabian Sea. And remaining 43 lie in Arabian Sea. Full stop. Out of the 572 islands of, can you just switch on this fan? Possible. Okay. Out of 572 islands, out of 572 islands, out of 572 islands of Andaman and Nicobar, comma, only 36 are inhabited. Only 36 are inhabited. Full stop.
The Bay of Bengal Islands. The Bay of Bengal Islands include Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands, which are largely tectonic. Konsa island is largely tectonic. See, although not all the islands of Andaman and Nicobar are, sorry, that is not the placement, are not what? They are not tectonically active. There is one island which is having barren island. Barren island is one which is tectonically active. That is the only one island. So we call this as they are tectonically active. सारे active नहीं हैं. And volcanic in origin. While the islands of Arabian Sea, while the islands of Arabian Sea are mainly coral formation. ये जो islands है यहाँ पे Arabian Sea की कैसे हैं? They are made up of coral formation. Coral formation क्या होता है? Dead and decay. Your what is your coral? Do you understand about what is coral? कैसे बनता है? See, for the people who do not have a background, simply आपको देखना है कि corals are present inside the ocean. ठीक है? क्या होते हैं ये? These are coral polyps. अब इनको एक तरह से समझिए, ये नॉन लिविंग है coral polyps, और इनके अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है जूजैंथली. जूजैंथली क्या करता है? इससे सपोर्ट लेता है. किस चीज का सपोर्ट लेता है जूजैंथली? नो, जूजैंथली इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ preparing the food. He can synthesize the food. They can synthesize the food. हाँ, come. They can synthesize the food. And since they can synthesize the food, क्या करेंगे वो? इनके पास they will provide color to the coral polyps. इनको कोरल को क्या देंगे? कलर देंगे. That is the main thing. And ये कैसा रिलेशन है? This is symbiotic relationship that they are having. क्योंकि जो जूजैंथली वो उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? कलर. ठीक है, और कोरल क्या प्रोवाइड कर रहा है इनको? सपोर्ट. तो दोनों का एक इंटरेस्ट है. एंड देन बोथ ऑफ देम आर हैविंग अ इंटरेस्ट. दैट देन व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि दोनों एक दूसरे से के साथ क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है. कितने लोगों को ये बात समझ में आई अभी तक? अब जब ये हम कहते हैं कि कोरल क्या हो गए? पोल्यूट हो गए, देन व्हाट विल हैपन? कोरल का जो कलर होगा या फिर ये सब चला जाएगा. बिकॉज मेनली क्या, सबसे पहले पोल्यूट होगी कोई भी चीज तो क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे विल डाई. एंड हु विल डाई इन दिस? जूजैंथली विल डाई. एंड द मोमेंट जूजैंथली विल डाई तो क्या होगा इनका कलर? व्हाइट. इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग. अब कोरल ब्लीचिंग से क्या होगा? दैट दिस विल बिकम हार्ड. आपका हार्ड हो जाएगा. एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? लैंड फॉर्म्स. एक ऐसा लगेगा कि सॉइल का नहीं बना हुआ. ये होल लक्षद्वीप इज नॉट मेड अप ऑफ सॉइल, इट इज मेड अप ऑफ कोरल्स. ठीक है, I'll make you write about corals also, क्योंकि this is important that you should know how Lakshadweeps have been made. They are made up of corals. Done? Coral bleaching, correct. Now write down. While the islands of Arabian Sea are mainly coral formation, full stop. Moreover, there are number of offshore islands. Moreover, there are number of offshore islands. Keep on writing. There are offshore islands
Noida. There are offshore islands along the mouth of Ganga. Along the mouth of Ganga, comma, eastern and western coast, and in the Gulf of Khambat. बहुत important line है prelims के लिए भी. In the Gulf of Khambat, in the Gulf of Khambat, and Kutch and Myanmar. Kutch and Myanmar. Myanmar. अभी आप सारा अंडरलाइन करके जस्ट सी कहाँ कहाँ इसका प्लेसमेंट है. ऑल ऑफ यू आर हैविंग मैप्स विद यू. सबके पास अपने अपने मैप्स हैं. जब मैं आइलैंड की बात करती हूँ तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि क्लियरली योर अंडमान. ठीक है. वन इज हियर where your what is present, your islands are present. Second, your Arabian Sea where you have Lakshadweep Islands. क्या यहीं पे आपका आइलैंड्स है? Mainly yes, but as I said, on a offshore side like this is the offshore, right? यहाँ पे भी आपके कुछ आइलैंड्स प्रेजेंट हैं. Then they talked about Gulf of Khambat. यहाँ पे भी you have certain islands. Can you see it in your maps? Then what else? Your Kutch. Here also some islands are present. So how many places the islands are present? So if in prelims it comes that your islands are present only in Andaman and Lakshadweep, so will it be a right statement for you? Not at all, because islands are present even in Khambat, they are present in Kutch, they are present in offshore areas where Ganga, etc. are there, right? They are making the delta. So what is the statement saying? That there are number of offshore islands along the mouth of Ganga. This is the mouth of Ganga. This is the mouth where it makes a delta, Sundarban delta. Sundarban delta, that is your mouth of Ganga. Then eastern western coast in the Gulf of Khambat, Kutch and Mannar. How can we forget Mannar? Where is Mannar? Here. Do you know about Park Strait, Park Bay and अभी नहीं पता ना आप लोगों को? ठीक है, I'll show you in this if I have PPT. ये देखिए यहाँ पे यानी spots Park Strait here. This is your Park Strait. This is your Sri Lanka. How many can actually identify this? This is Sri Lanka. And this is Tamil Nadu. अब बीच में क्या है आपका? Park Strait. What is the difference between strait and isthmus? A water body dividing two land masses is strait. Simple. What is isthmus? A land dividing two water bodies. ठीक है, that is the difference between strait and isthmus. अब ये क्या है आपका? यहाँ पे Park Strait है. यहीं पर आपका क्या है? Gulf of Mannar. Now Gulf of Mannar is what? Also your only marine bio. Gulf of Mannar is also your
अभी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, you will study. Or people who have done GS, maybe they know. Gulf of Mannar is one of your biodiversity? No. And you will say this. Biosphere reserve. It is one of your biosphere reserve. Marine biosphere reserve, in fact. ठीक है? Can you keep it in order? Park Street, Park Bay. इसको आप ऑर्डर में लिख सकते हैं, कौन सा पहले आएगा, पार्क बे पहले है या पार्क स्ट्रीट पहले है, बताइए. विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज सेकंड, बताइए. हाँ, यहाँ पे बताइए. कीप इन, टेल मी इन दिस मैप. ये आपको श्रीलंका भी दिख रहा है यहाँ पे. दिस इज योर तमिलनाडु. यहाँ पे बताइए पहले कौन सा है, पार्क बे पहले है, पार्क स्ट्रीट पहले है, ये क्या पहले है. देखिए, दिस इज योर पार्क स्ट्रीट, दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार. ठीक है, इसके ऊपर है आपका, बीच में है पार्क बे, यहाँ पे आपका मेंशन नहीं है. कोई भी मैप में मेंशन नहीं है. ये रहा पार्क बे. दिस इज स्ट्रेट, मैंने बोला था स्ट्रेट पहले है, बे बाद में है, देन गल्फ ऑफ मन्नार. और आइलैंड कौन कौन से हैं? इफ यू हैव टू मार्क सम आइलैंड्स हियर, what sort of islands can I mark here? See, there is an island known as Talairi Tivu. Your Tivu island, यहाँ पे एक island present है which you call it as Tivu. In short form I am writing Tivu island is present here. और क्या present है यहाँ पे? तो आप लोगों को ये समझ आ रही है? Net I just want to tell you that how many islands this area is having. So if in prelims this comes that you have to mark what, that where your islands are present, then you should know this area, this area, this area, your Arabian Sea, your Bay of Bengal, your mouth of Ganga River, then your Kutch, your Khambat, and your Gulf of Mannar. How many of you can understand this so far? Online students, especially you. Then we'll quickly move one on one. Like we'll move towards each topic, like in islands of Bay of Bengal. Done. Okay. Now come to islands of Bay of Bengal. Go back to this. Exit का option नहीं है क्या यहाँ पे? ठीक है. So लिखिए islands of Bay of Bengal. Write down. The main islands of Bay of Bengal are Andaman. The main islands of Bay of Bengal are Andaman and Nicobar group. कौन सा ग्रुप है? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप. अब इस आइलैंड को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. Nicobar group. Full stop. The Andaman and Nicobar groups are separated by. Andaman Nicobar means ये जो आपका अंडमान है, see, this is your Andaman. Then it is separated by a channel, which you call it as 10 degree. उसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, this is Nicobar. So basically your Andaman and Nicobar are separated by a 10 degree channel. ठीक है? They are separated by 10 degree channel. This is the difference. Now write down the shortest distance of Andaman Nicobar island from mainland is about
2,000 kilometer, and extreme southern point is about 2,000 kilometer, and extreme southern point is the Indira Gandhi point, the southernmost point of the Great Nicobar, the southernmost point of the Great Nicobar. Next point. The Andaman and Nicobar Islands, the Andaman and Nicobar Islands have a warm tropical climate, a warm tropical climate all year round, all year round, with two monsoons, with two monsoons. Full stop. Temperatures are about 25 degrees Celsius. Temperature are about 25 degrees Celsius, but the sea breeze has, but the sea breeze has cooling effect. अब आप मुझे बताइए, अंडमान is falling where? Near the equator. So what kind of temperature they should have? Since you have not done temperature, people who have not done GS, just for them also I'm explaining in a very layman language. अगर आपका इक्वेटर के पास है आइलैंड या कोई भी लैंड मास, so what kind of temperature you expecting there? This is known as tropical kind of climate that they will experience. A tropical kind of climate क्या होता है? For example, you will have the insolation coming directly over that place. अगर insolation बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो every day there is a rainfall at 4 p.m. Not exactly at 4 p.m. पे ही होगी, but this is the way to tell that evening में there must be a rain which is happening. So कैसा रहता है temperature? Moderate. Temperature is fine. बहुत ज्यादा क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है. Temperature is fine. So even in Kerala, there are places where this kind of climate is present, right? When you talk about equatorial kind of a climate, so we talk that they will be having the direct insolation throughout the day, and because of that 4 p.m. upper there is a rain which is happening around that time. So kaisa rahega temperature? That is why I have written, please underline, a warm tropical climate all round year with two monsoons. Full stop. Temperature is near to 25 degrees Celsius, but the sea breeze has, but the sea breeze has cooling effect. The sea breeze has cooling effect. Full stop. The islands receive heavy rain. The islands receive heavy rain, comma, with monsoon season lasting, with monsoon season lasting mid-May to mid-September. Mid-May to mid-September. ठीक है? Mid-May to mid-September. Next लिखेंगे. The Andaman and Nicobar Islands are thickly forested. अब soil इतना ठीक है अंडमान निकोबार का, और rainfall is also happening regularly. Temperature is also fine, so they will have a good forest thickness. Right, or Andaman Nicobar Islands having thickly forested and rich marine life. They are having thickly forested and rich marine life. The islands are
a bird watcher paradise. Islands are a bird watcher paradise with 242 species with 242 species recorded. Next line. The entire region falls in the major earthquake zone. The entire region falls in the major earthquake zone. Full stop. The barren island in the Andaman. I'll make you draw barren island also. Is it affected by the southwest monsoon and the northeast? Tanishka, they are only affected by the southwest monsoons, not northeast. Only by southwest. क्योंकि northeast जब आते हैं, what is the reason? For this is only for Tanishka because she has done GS का portion climate and also for people who जिन्होंने climatology कर लिए, if they understand. जो लोग नहीं समझते हैं, they can leave this part. ठीक है? जो साउथ वेस्ट मानसून जो आपका आता है, it actually comes here first. ठीक है, क्योंकि this is पहले आपको क्या पड़ेगा, these साउथ वेस्ट मानसून में यही पड़ेगा पहले आपका, and then it divides like that. क्योंकि आपका यहाँ पर है आइलैंड, सबसे पहले यही है, तो साउथ वेस्ट मानसून they will come and hit and there is going to be a rainfall here. ठीक है, but north east क्या है, north east is coming from here. तो यहाँ पे they will pick up the moisture from Bay of Bengal and they will hit it. तो नॉर्थ ईस्ट का नहीं होता है, only साउथ वेस्ट. Right, in the Bay of Bengal there are two volcanic islands. In the Bay of Bengal. Barren Island in the Andamans. Sorry, I have not completed the sentence. देखिए, Barren Island in the Andamans have an active volcano. Next line. In the Bay of Bengal, comma. There are two active islands. Barren and Narcondam. There are two active islands, Barren and Narcondam. Situated within 80 kilometer east. Situated within 80 kilometer east of Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar. Full stop. Andamans, basically they are east of Andaman. ठीक है, अंडमान निकोबार से आप साथ में लिख लेते हैं, लेकिन ये जो बैरन आइलैंड्स है ये आपके मेजरली अंडमान के ईस्ट में यहाँ पर हैं. ठीक है, देन यू हैव अ 10 डिग्री चैनल, देन यू हैव निकोबार. तो आप निकोबार को अगर कट करना चाहते हैं देन यू कैन डू दैट. मैंने जनरलाइज में बोला था, बट स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू राइट दे आर ईस्ट टू अंडमान्स. इंपॉर्टेंट है, निकोबार को कट कर दीजिए. नेक्स्ट इज the Andaman Islands have been formed by, write down, the Andaman Islands have been formed by the extension of, they have been formed by the extension of, Andaman Islands have been formed by the extension of the tertiary mountain chain, of Arakan, Arakan, Yoma.
Aracanyoma. 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 Full stop. The main rocks of these islands are sandstone. Sandstone. That is the main rocks of the island are sandstone, comma, limestone, limestone, and shale. And shale. Write down. The Nicobar group of the island comprise of the Nicobar group of the island comprise of 18 islands. It comprises of 18 islands, of which 11 are inhabited. Of which 11 are inhabited. Write down the physiography of the Nicobar Islands is mainly the physiography of Nicobar Islands is mainly of the coral origin. Is mainly of the coral origin. ठीक है, अब आपका ये है क्या, अंडमान. ये कैसे बना है आपका, एक्सटेंशन ऑफ अराकन्या माउंटेन्स. नाउ वेयर आर दिस अराकन्योमा माउंटेन्स? हाँ, नॉर्थ ईस्ट. वेरी गुड. कहाँ पे आपको कहाँ मिलता है अराकन? म्यांमार में भी है. इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड अराकन्योमा. बिटवीन व्हाट? म्यांमार एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है. और उसी का एक्सटेंशन क्या है, दीज अंडमान एंड नॉट निकोबार बट अंडमान मेनली, उसी का ही एक्सटेंशन है. और ये कब बने थे? दे वर फॉर्म्ड इन टर्शियरी पीरियड. क्या है ये टर्शियरी पीरियड फॉर एवरीवन, फॉर द पीपल हु आर न्यू इन द क्लास? सौम्या, टर्शियरी पीरियड आपको बस अभी ये याद रखना है कि जो हमारे हिमालयस बने थे वो कौन सा पीरियड था, टर्शियरी. आई होप दैट यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ ज्योग्राफी, शायद आपके पास पहले भी है. दैट इज व्हाट आई गॉट टू नो. यस सौम्या? Okay, then you understand, you must be understanding what I am saying, right? Are you getting till this class? मतलब 5 minutes we will take your session. Good. ठीक है, लास्ट के जो 10 minutes होंगे I'll give the answer writing practice to them and till that time we can have a conversation, आपका orientation, whatever you want to ask. ठीक है? All right. So this is the thing. अब किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है समझने में so they can ask. प्लीज देखिए, रिवाइज करिए और मुझे बताइए कि कहीं पे भी आपको कोई लैग लग रहा है या फिर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है या क्लैरिटी नहीं मिली है. एनीवन कैन आस्क. ध्रुव, योर टेस्ट पेपर्स आल्सो आई हैव गॉट, आई विल शेयर इट विद यू सून. ईशान, यू, पीयूष, सौम्या, तनिष्का, आप लोगों को ठीक है. राहुल, स्थापना, सूरज, ये सब प्लीज लेट मी नो. गुड. ध्रुव रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, अनम्यूट करके बात करते हैं. व्हाट हैपेंड ध्रुव? ईशान, you, Tanishka, Piyush, Soumya, they are active. Good. Good. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर लिखिए, राइस इज द मेन क्रॉप इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. राइस is the main crop in the Andaman and Nicobar Islands. Full stop. Coconut and erica nut. Spelling is A R E, erica, C A
nut, Erica nut, coconut and Erica nut. Coconut and Erica nut are the main cash crops of Nicobar. ऑफ निकोबार. आपने ये ट्रेंड देखा है कि देखिए कोरल रीफ्स के ऊपर इफ यू सी लक्षद्वीप के ऊपर आइडियली सॉइल है नहीं क्योंकि वो लैंड ही नहीं है और कोरल एक लैंड नहीं है. सी आपका जो कोरल प्रोसेस है, कोरल क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग जब होती है तो हार्ड शेल्स बन जाते हैं. वो शेल्स कैसे बनते हैं वी विल डिस्कस इट, दैट इज अनदर टॉपिक. बट इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं बट आफ्टर दिस टॉपिक विल गेट कंप्लीटेड. बट वो हार्ड शेल्स किसके बने होते हैं, कोराल्स के बने होते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट अ लैंड मास. अगर लैंड मास नहीं है तो उस पर सॉइल भी नहीं होगा तो कैसा होगा उसका ग्रोथ, लेस होगा, वेजिटेशन बिल्कुल कम. बट दे आर एबल टू ग्रो सम ऑफ द क्रॉप्स. कौन कौन सा, जैसे आपका कोकोनट. तो लक्षद्वीप में आपको कोकोनट मिलेगा, एरिका नट्स मिलेंगे. कोकोनट इज वेरी फेमस. वहां पे आपको कोकोनट का कल्टीवेशन इज टू गुड. बट इफ यू थिंक कि बहुत नेचुरल लैंडमार्क की तरह वहां पे कल्टीवेशन हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. इसलिए क्वेश्चन भी आया था एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दैट लक्षद्वीप इज हैविंग इज मेड अप ऑफ व्हाट and they are not, there is not enough production of the crops because of what. So they have given that it's not a landmass, it's a made up of coral reefs. और लोगों को क्या लगता है बिकॉज वहाँ पे जैसे हार्ड वहाँ पे लोग रह रहे हैं इनहेबिटेड है तो लैंड मास ही होगा या आइलैंड है, बट दैट इज नॉट द पार्ट. इसलिए आप डिस्टिंक्शन देखेंगे जब अंडमान का आई एम टॉकिंग अबाउट कल्टीवेशन ऑफ राइस. और जब मैं निकोबार की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट कोकोनट बिकॉज कोकोनट निकोबार इज मेड अप ऑफ corals origin and Andaman is made up of landmass which is a extension of Arakan Yoma mountains. आ रहा है सबको डिफरेंस समझ में, ठीक है. Write down full stop. Tropical fruits like pineapple, tropical fruits like pineapple, comma, variety of bananas, variety of bananas, comma, sweet papaya are also grown in smaller scale, are also grown in smaller scale on this island, on this island. Write down. The tribal population, the tribal population in the Andaman Island, in the Andaman Island is fast dwindling. Fast dwindling matlab, what do you mean by dwindling? Population dwindle matlab kya, thoda change hona, right? So write down the population in Andaman Islands is fast dwindling, DWIN, DWINDLING, dwindling, is dwindling, full stop. Most of its present inhabitants, most of its present inhabitants are migrants from, are migrants from, most of its inhabitants are migrants from Bangladesh, comma, Myanmar and India, full stop. Write down. Some of the well-known surviving tribes, write down. Some of the well-known surviving tribes of Andaman and Nicobar Islands is, some of the well-known surviving tribes of Andaman and Nicobar Islands is, or are should be used, Onjis, Jarevas, Onjis, Jarevas, and write down Sentinelese,
SENTINE, SENTINE, सेंटिनलीज। अब सेंटिनलीज कितने होते हैं? बहुत कम है सेंटिनलीज का पॉपुलेशन, वेरी लेस। Then Cherivas is also your important tribal group, Onjis. ये सारे क्या हैं आपके? Are they forming a part of PVTG, which is your particular vulnerable tribal group? PVTG, correct? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि which tribal group I'm talking about Onjis, Cherivas, Sentinelese. अब Sentinelese का जो population है, which is very very less, and it's important कि इनको क्या किया जाए? They should be given extra care and what? Protection from the outside world, because they are too much engrossed in their own thing that they do not want to have exposure, and then they get intimidated. If somebody will go to them and try to explain them the things that this is not the right way, they will think that somebody has come to in their territory only to expel them from that area. ठीक है, इतना ज्यादा वो vulnerable है, right? So आप इनको अगर टच भी करेंगे तो what will happen? It is a loss for them only. इनको चेंज किया जा सकता, but there are again methods by the government which are being taken for giving them the, because they want that they should come in the mainstream. अब mainstream में लाने का एक ही तरीका है by giving them some, what kind of opportunities, what do you call them as, some kind of reservations in the different areas, and also the facility so that they can study. But it's very very hard for them to study also, because बचपन से they are not well aware of all this, कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, and then it becomes difficult for them to come in the mainstream. ठीक है, next write down. One of the largest and also rarest crabs, CRABS, one of the largest and one of the rarest crabs, one of the largest and rarest crabs, one of the largest and rarest crabs in the world, comma, the giant robber crab, the giant robber crab, giant robber crab. ठीक है, the giant robber crab, comma, can be found in Vandoor, WAN, Vandoor, WANDOOR, Biosphere Reserve, Vandoor Biosphere Reserve. Now your task is right now, everyone, to spot where is Vandoor Biosphere Reserve. You can also Google it if you cannot find it on, in the map. Do this task. देखिए पीवीटीजीज के बारे में भी आ सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट। जब हम ट्राइबल, क्योंकि हम किसी भी एरिया को पढ़ रहे हैं, फिजियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कौन कौन सी ट्राइब्स वहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल्दो इट विल बी कवर्ड इन अ डिफरेंट पोर्शन ऑल टुगेदर, बट दे कैन आस्क। अब आप सेपरेटली टॉपिक डेफिनेटली करेंगे, बट द पॉइंट इज व्हाई नॉट टू डू इट अलोंग व्हाट आपका एक ही साइकिल में। अगर हम फिजियोग्राफी कर रहे हैं किसी एरिया का, साथ ही साथ हम उसके बारे में ऑनचीज, जरीवास, इन सब चीजों के बारे में भी एक बार पढ़ लें।
Acha, Soumya, I'm talking about, I have told them to take an atlas and they always keep a atlas on in the class whenever they have to refer the places which I'm telling them. Because in Indian geography, in paper 2, what happens that there are places which come in to mark, okay? Specifically, they'll tell you the mark the areas which they are giving you. For example, in question number 1, they're giving you various topics and then you have to mark them. Apart from that, अगर mark करने के लिए भी नहीं है, then also if they are asking about some places, then you have to draw the map. बहुत ज़्यादा maps का use होता है आपके geography option में, because you have to support your answer और आप जल्दी से आपको map draw करके you have to tell. ठीक है? So you can buy any atlas, your Oxford Black Swan, जो भी आपको लगे which is good for you, you can buy. बताइए वंडूर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? गूगल कर लीजिए अगर इफ यू आर नॉट स्पॉटिंग इट इन योर मैप्स. हाँ, is also known as, right? So अब इनका न्यू नेम क्या है और कौन से उसमें है, पहले आप ये बताइए. कौन सा अंडमान? महात्मा गांधी. सबसे पहले ये बताइए क्या है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क. इसी को ही पहले क्या बोलते थे? वंडूर बायोस्फीयर रिजर्व. नहीं, आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं. अब हाँ, ये अब तो कुछ गलती कर रहे हैं, ये गलत बोला है आपने, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व. करेक्ट. तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप स्पॉट करिए पहले. आपकी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज सी. मुझे लगा इसका नाम चेंज हो गया शायद. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. वी रिसेंटली आई हैव नॉट स्टडीड द करंट अफेयर्स. क्या हुआ, नहीं मिल रहा आपको? अच्छा, साउथ अंडमान और ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे देखिए एक बार. साउथ अंडमान पे देखिए, राइट डाउन वंडूर बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ अंडमान. आई एम गिविंग यू द हिंट. व्हाई आर यू ड्राइंग राहुल? पहले देखो कहाँ पर है. वंडूर इन साउथ अंडमान. somebody is asking something. तभी हाँ, लिख लीजिए सीधा. वंडूर is placed in South Andaman. Simply write down this. ठीक है. All right. Now what we'll do, we'll understand the maps itself. आपको मैप बनाना है मेरे साथ. No, Piyush, there is some confusion. It's not Vandoor National Park. It's basically, see, generally what they say is, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वंडूर एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ अंडमान के अंदर एंड इट्स अ गेटवे टू योर मरीन नेशनल पार्क. ठीक है. सो दैट इज व्हाट, बट पीपल राइट इट लाइक दिस आल्सो, वंडूर मरीन, बट देयर इज नो बायोस्फीयर रिजर्व. दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि ऐसा कोई बायोस्फीयर रिजर्व की कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आपके? वंडूर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट.
There is no biosphere reserve like that. So I think there is some printing mistake or something has happened in this PDF. हाँ, that's what I'm saying ना, उसमें कोई बंदूर हमने नहीं सुना बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर. बंदूर का कोई मेंशन नहीं है. I think there is some printing mistake which has happened. Okay, no problem. ठीक है. Next, you will draw this. One by one, we'll look at the अंडमान के mainly कितने islands हैं that you have to study? 4 actually. No, Piyush, what you are saying is Bandur and Mahatma Gandhi National Park is same. That is what you are saying, no? I have to check this thing because I have little. हाँ, मुझे doubt है इसके ऊपर वही. Because in the recommended this thing text it has been written like that, but it's not totally correct. Because जो sites पे आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे dicey लग रहा है. Printing mistake कुछ है या फिर knowledge gap हो रहा है. I have to search this and then I have to come back. Okay. This is your North Andaman. You can draw also with me. This is your North Andaman. North Andaman. ठीक है. Next is your Middle Andaman. Then your South Andaman. And next is your Little Andaman. Okay. Your Little Andaman. This is your Duncan Passage. This is your Duncan Passage. Okay. This passage is dividing what? Your South Andaman from Middle, your Little Andaman. Okay. Next, this is your 10 degree, which is dividing your whole set of, ये क्या है? अंडमान, पूरा अंडमान है. ठीक है. अंडमान को निकोबार से कौन डिवाइड कर रहा है? 10 डिग्री. आर यू गेटिंग ऑल दिस? निकोबार हम ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ देखेंगे द एरियाज ऑफ नॉर्थ अंडमान. दिस इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी. बिकॉज व्हेन यू राइटिंग अबाउट आइलैंड्स यू शुड नो द प्लेस, तभी आप इसको लिख पाओगे. द डंकन पैसेज हाउ दे आर डिवाइडेड. सो फर्स्ट वन इज योर नॉर्थ अंडमान, फिर आपका मिडिल अंडमान, फिर आपका साउथ अंडमान. ठीक है. दिस इज योर विच सी? अंडमान सी. इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन ओनली, मतलब बे ऑफ बंगाल के पास बिल्कुल. नाउ यू हैव टू सी ऊपर क्या है आपका. यहाँ पे है म्यांमार. म्यांमार एंड योर नॉर्थ अंडमान इज डिवाइडेड बाय योर कोको चैनल. दिस इज योर कोको चैनल. ठीक है. आपका वेयर इट इज योर दिस बैरन आइलैंड. यू हैव टू सी द प्लेसमेंट ऑफ द बैरन आइलैंड ऑल्सो. वेयर इट इज? मिडिल अंडमान के बिल्कुल इधर यू हैव बैरन आइलैंड. ठीक है. here you have Barren Island. Okay, where is Narcondam? Can you see North Andaman? यहाँ पे है आपका नारकोंडम. और दोनों ही क्या है?
both of them are volcanically active, like they are the active volcanoes are present here. Simply you write down active volcanoes. The capital Port Blair is on South Andaman. ठीक है, पहले आप ये ड्रॉ करेंगे, स्टडी दिस एरिया and let me know. इसके बाद we will draw what? Nicobars. You called archipelago, आपने सुना है word, that is a group of island. If it comes archipelago written somewhere, you understand this is a group of island that they are referring to. ये साउथ अंडमान है, पोर्ट ब्लेयर दिस कैपिटल. और ये डंकन पैसेज से डिवाइडेड है, दैट इज अ लिटिल अंडमान. अब आपका एक्टिविटी क्या है? यू हैव आल्सो फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. Shall we move towards other part? अब 10 डिग्री चैनल से कौन डिवाइडेड है? What is divided through 10 degree channel? 10 degree channel? अंडमान एंड निकोबार. तो क्या आना चाहिए नीचे फिर? Here you should have, यहाँ पे मतलब 10 degree or 10 degrees here, and everybody can get it. This is 10 degree. ठीक है. Then here you will have Car Nicobar. Then next will be your only two are there, Car, and next is your Little Nicobar, and then it's your Great Nicobar. Ab Great Nicobar, because of tsunami, it got submerged. ठीक है, but that is what we consider, that is also part of it. So you have Car Nicobar, first one, then you have Little Nicobar, and then you have Great Nicobar. समझ में आ रहा है सबको? अब important क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? There was an issue of this island which is known as Catchall. Spelling is Katchall. Catchall Island. Now your assignment is to write about this island, Catchall Island. Write on the assignment. Write a short note on Catchall Island and why this is important island in Indian Ocean. जितना भी आपको कुछ भी पता है इसके बारे में,
You have to write on this island. जो भी आपका issue भी हुआ था इस island को लेके, the background, that is also you can write along with the main thing. ठीक है? Now your Catchal Island and your this thing Little Nicobar is divided through Little and Catchal. They are divided through which? Sombrero. Write down the spelling. Sombrero. 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 Channel. This is how it has been divided. आपको बहुत डिटेल में नहीं करना है, but this is more enough detail that I have given to you. ठीक है? Let me check if some point has been missed or not. Lakshadweep also will complete today only. If you want to write about some of the important peaks here, ये important है, definitely write down. Andaman and Nicobar Islands are having important peaks such as Saddle Peak, Saddle Peak. Saddle Peak. Next is Saddle Peak कहाँ पे है? This is your North Andaman. Saddle Peak आपका यहाँ पे है, North Andaman. Saddle Peak in North Andaman. Next, write down Mount Diawalo. Mount Diawalo here in Middle Andaman. Mount Diawalo in Middle Andaman. Then write down Mount Thulier in Great Nicobar. Write down Mount Thulier. Great Nicobar कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में आपका. ठीक है, but I am writing here only. कहाँ पे? This is Great Nicobar पे. Mount Thulier. This is your criteria that you have to write. अच्छा, वन थिंग विच आई हैव स्पेसिफिकली फॉरगॉट टू टेल यू. ठीक है, जो बैरन आइलैंड है वो आपका एक्टिव आइलैंड है. जो आपका नारकोंडम आइलैंड है दैट इज योर डेड. हाँ, एक्टिव मीन सॉरी एक्टिव वॉल्केनो है. और जो आपका नारकोंडम है दैट इज योर डोरमेंट वॉल्केनो. देखिए डिफरेंस है डोरमेंट में और आपका एक्टिव में. जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे आप डिफरेंस. अभी आपको मैं बता देती हूँ. एक्टिव मीन्स जो इरप्ट होने के चांसेस जिसके हमेशा रहते हैं, ये एनी टाइम इट कैन इरप्ट. बट डोरमेंट होता है जो बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुआ है. आई थिंक वी हैव रिटन एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग. ठीक है. नाउ यू कैन राइट डाउन इन अरेबियन सी. राइट डाउन islands of Arabian Sea. How much you have got everyone? Andaman and Nicobar. Now we are moving to the Arabian Sea. Your Lakshadweep. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. 2 seconds, 2 minutes. ठीक है, क्लियर. गुड गुड गुड. लिखिए आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी. नाउ islands of Arabian Sea. First write down Lakshadweep
Lakshadweep, islands located in, islands located in Arabian Sea, near Malabar coast. Malabar coast is where? Near your this part, your Kerala. Your Malabar coast. ठीक है? Comma, are formed by coral deposits. They are formed by coral deposits. They are formed by coral deposits and is divided into two parts, and it is divided into two parts by 9-degree channel. By 9-degree channel. Next point. These islands were earlier known as, these islands were earlier known as Lakadive. Lakadive. These islands were known as Lakadive, Minicoy, Minicoy, and Amantivi. And Amantivi. Full stop. In 1973, it was named Lakshadweep. It was named Lakshadweep. ठीक है? Write down. The northern island groups are known as, the northern island groups are known as MNDB. The northern island groups are known as MNDB. And southern islands are known as Kannanor Island. And southern islands are known as Kannanor Islands. ठीक है? Now write down more. There are 43 islands in it. Full stop. The shortest distance from mainland is 109 kilometer. 109 kilometer. Kavaratti, Kavaratti, which is the capital of Lakshadweep, is located on Lakshadweep. Oh, sorry, it is located on. Just hold on. What did I say? I've just said something twice. फिर तेज बोलिए.
ओके, सीधा लिखिए कवरिटी इज द कैपिटल, फुल स्टॉप. Write down now. Lakshadweep Islands are separated from. Lakshadweep Islands are separated from Maldives Island. Lakshadweep Islands are separated from Maldives Island by 8-degree channel. मतलब अगर ये आपका पूरा आइलैंड का ग्रुप है, here is your Maldives, then this is your 8-degree channel. और 9 डिग्री क्या है जो इनके बीच में डिवाइडेड है. विल मेक डायग्राम, डोंट वरी. 8-degree channel. अब hills, very very important, right, point to be noted. Hills and streams are absent. Hills जैसे आपका अंडमान में क्या है, सैडल पीक्स है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है. Hills and streams are absent in this island. Are absent in this island. Full stop. The Minicoy is the largest and has a lighthouse and weather observatory Full stop. Fishing is the main occupation of the people. Fishing is the main occupation of the people of Lakshadweep. क्योंकि और कुछ आप कर नहीं सकते. कोकोनट अच्छे वहाँ पे you will have a cultivation, but बाकी because of this lack of soil, nothing more is grown there. ठीक है. Next, although pulses and vegetables are also grown. Okay, that's it. Now you will draw the island. देखिए यहाँ पे है आपका आमिन टीवी आइलैंड, ठीक है. Then you have small islands present here like Cademet Island, ठीक है. Agati, Piti, Kavarati, ठीक है. And here you have Minicoy. Here you have 9-degree channel, ठीक है. Okay, they are divided from the 8-degree. 8-degree में क्या divided है आपका? Maldives यहाँ पे है. And there are important islands also present here. You can mark some of the important. Androt, this Agati has been mentioned already. Okay. Have I mentioned Kannur Islands? Just after Kavarati, there is a Cannanore Islands. Okay. These are present in Arabian Sea. Yes, you will do a question right now. 8 minutes. You will be given time. 10 minutes में आपको एक question करना है. 2 minutes आपको रिसर्च करने के लिए मिल जाएगा और 8 minutes आपको राइटिंग के लिए. प्लीज स्पेसिफिकली यूज दिस टाइमलाइन. आप अपने साथ प्लीज ऐसे मत करिए दैट यू आर एक्सटेंडिंग द टाइम लिमिट. 2 minutes आप रिसर्च करेंगे क्या क्या आपको लिखना है. आप गूगल करना है, गूगल कर सकते हैं, या फिर मेरी नोट से आपको देखना है.
तो आप वो देख सकते हैं, रेफर तो करने पड़ेंगे नोट्स while writing the answer. Write down the question. Highlight how physiographically, highlight how physiographically, physiographically, Andaman and Nicobar Islands are different from Lakshadweep Islands. Okay, do this. Ma'am, between Car Nicobar and Little Nicobar, do we need to mention? हाँ, if you want to mention, then yes, definitely. आप कर सकते हैं मेंशन, उसमें कोई एक्स्ट्रा आप कुछ लिखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर मतलब जो इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? Okay, Soumya, you just ask anything if you want to ask. So this is the time limit. 10 minutes हैं आपके पास, आप पूछ सकते हैं कुछ भी, बताइए. What doubts you had? अच्छा, अबाउट द प्लानर, ठीक है, क्या प्लानर में आपको डिस्कस करना है, मतलब कैसे आपका टॉपिक वाइज चीजें होंगी, दैट इज व्हाट यू वांट टू डिस्कस. ओके, सो व्हिच आर यू हैविंग सम प्लानर, एनी प्लानर हैज बीन गिवन टू यू? Okay, so you'll get the planner, that is not an issue. See, I do not give the planner. What I do is, although if you want, then you will definitely get. There is no issue in that. देखिए, आपको सिलेबस जैसे डिवाइडेड है उस हिसाब से आपका the syllabus will go on. For example, if your paper 2 paper 1 are there, so paper 2 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, your Indian geography which is a part, and इसमें क्या है, your physiography. I think you are mistaken. आप सिलेबस को प्लानर तो नहीं बोल रहे, आप सिलेबस की बात कर रहे हैं. प्लानर इज डिफरेंट, सिलेबस इज डिफरेंट. प्लानर बेसिकली इज जस्ट दैट कि आपका ये पार्ट कितने क्लासेस में आपका खत्म हो जाए, दैट इज व्हाट यू, कि आप पहले क्या पढ़ाएंगे, ये क्या पढ़ाएंगे, या फिर आप सिलेबस की बात कर रहे हैं. ओके, सो बेसिकली देखिए, क्लासेस जो हैं वो आगे पीछे हो सकती है, उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है. देखिए, आपको 2 क्लासेस मिली हैं किसी भी टॉपिक को खत्म करने के लिए, आप 2 ही में कंप्लीट कराएंगे, दैट इज नॉट फिक्स, क्योंकि आप 2 में भी करा सकते हैं, 1 में भी करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना समझ आ रहा है. बिकॉज आई गो बाय द फैक्ट दैट वेदर द क्लास इज एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, एंड आई रिड्यूस एंड इंक्रीज माई स्पीड अकॉर्डिंगली. So giving the planner in this case is of the कितना classes इसमें लगेगा, that there is no use. Although if you want, I can give it to you, right, in 1 or 2 days you will get that. But apart from that, but this is not a hard and fast rule कि इसी जो इसमें लिखा है वो उसी से होगा, क्योंकि क्लास को टॉपिक समझ नहीं आ रहा है. there is no point of me that I can just complete one topic in one class. None. First point is this. Second is that if for example, if I'm talking about Indian your physiography, a physiography may if I have written in a this manner. For example, first class I will take of your mountains. Second, I will teach you Thar. Third, I'll teach you islands. It can also happen because this I can change the strategy. For example, I can make you read the island first and Thar later. ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन क्या है हमारा टॉपिक का. तो ऐसा भी हो सकता है दैट आई कैन स्विच. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हाफ एन आवर है, लेफ्ट है, आई विल नॉट वेस्टेड हाफ एन आवर का टाइम. आई नो दैट आइलैंड्स खत्म हो सकते हैं, थार खत्म हो सकते हैं, थार डेजर्ट, आई कंप्लीट दिस. तो ये वाला जो नीचे था आपका पोजीशन पे, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है. तो अभी स्विच इट इन दैट वे, हम अपनी तरफ से मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, सो दैट बिकॉज वी ओनली हैव टू रन द क्लासेस, ठीक है. तो आपको सिलेबस
आपको सिलेबस की तरह देखना है इसको आप देख सकते हो, लेकिन इफ यू विल गो बाय द फैक्ट कि आज थर्ड इजट ही पढ़ाया जाएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हो सकता है 1.5 क्लास मतलब एक 1 क्लास हियर एंड 1.5 डे लग जाए, नेक्स्ट क्लास में भी आपका हाफ एन आवर आपका मैं ले लूँ, जो डिपेंडिंग अपॉन द कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, दूसरी चीज जैसे यहाँ पे फिजियोग्राफी लिखा है, दूसरा आपका ड्रेनेज सिस्टम लिखा है, तो I can do one thing कि ड्रेनेज ना पढ़ा के I can give you the another thing. For example, I can give you the climatology, Indian monsoon. I will think that Indian monsoon खत्म कर देते हैं पहले और फिर I will do the drainage ऐसे, ठीक है। So although you will get, but I'm just saying that it is not run like that. हाँ, आप इसमें ये देख सकते हो कि आपके टॉपिक्स खत्म हुए हैं नहीं। Although apart from that I give the syllabus also in the class. कि अगर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का इंडियन ज्योग्राफी का है, have you got the printouts of Indian geography syllabus? कल मिल जाएंगे आपको, सिलेबस तो तैयार है। आई थिंक प्रिंट आउट्स आर नॉट रेडी, दिए थे ना मैंने। कैन समबडी जस्ट रिमाइंड मी, हैव आई गिवन, दिया था ना? आपको नहीं मिला होगा, कैन समबडी जस्ट रिमाइंड मी। ऐसा हो सकता नहीं है वैसे, नॉट ऑन पोर्टल, ओके। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है, बिकॉज आई गॉट द प्रिंट आउट्स, अब मुझे याद आ रहा है। सौम्या, you are offline student now या ऑनलाइन स्टूडेंट हो आप? as far as I know, you are offline student, हाइब्रिड, ठीक है। तो पोर्टल पे इट विल बी अपलोडेड, दैट्स नॉट एन इशू। I concerned department will upload it on the portal. If you're not getting on the portal, then you can tell me कि you have not received this thing. But apart from that, there is no issue. Portal पे आपको सब कुछ available होगा, ये syllabus everything, and I'll check if they have been not uploaded on the portal syllabus yet, then why. ठीक है? और पूछिए आप, ठीक है। Have you done writing? No. I have to complete third as it also. I'm thinking that tomorrow I'll start with a new topic. And ma'am, could you brief me about the test or like when? I give the daily assignment, Soumya. For example, in class, I'll make you, for example, I've done the topic and then I'll give you the assignment. For example, in the class, if I think that you have a lot of time, ample time, then I give 8 minutes to write one answer. That is ideally how much time you should take in the paper as well. So this is a practice that I want you to have in the class itself. Apart from that, for the your assignment, these are the assignments which I give you after I have done a topic. So these assignments you can do at home and submit to me online on my mail ID, and I'll get it. I'll check it and give it back to you, depending upon my schedule, right? Apart from that, the regular test that will be conducted, but after completion of one for certain syllabus. For example, if 15 days से मुझे ऐसा लगता है कि entire syllabus has been completed, then I'll conduct a test. This time, on Saturday, there is going to be a test on population, and this is not for you guys who have just joined. This is for my old people, old students who have joined earlier. So this is for them. आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपका यहाँ से start हुआ है syllabus, and ये आपका पेपर 2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
ठीक है. Alright, we should move to Indian deserts now. I think 8 minutes हो गए. Have you checked the time? और आपने शायद लेट ज्वाइन किया है सौम्या. आपकी क्लास मेरे साथ 2-3 दिन पहले हुई थी, इफ आई रिमेम्बर. सो जो बीच में आपको मैंने जो भी कराया उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट. और आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप प्लीज लेट मी नो. करेक्ट, विल बी स्टार्टिंग विद पेपर 2. करेक्ट, पहले पेपर 2 होगा फिर पेपर 1. ओके, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेना सौम्या फ्रॉम एडमिन डिपार्टमेंट. दैट पेपर 2 से जैसे भी आपका जहाँ से स्टार्ट हुआ है, गिव मी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. आई थिंक आपको शो भी कर रहे होंगे, if I'm not wrong. Just have a look at your portal. Yes, Dhruv. Ma'am, I have a doubt. Only Andamans are made up of land formation, whereas both. Yes, correct, Dhruv. Okay. Now, quickly moving to Indian desert, write down. A desert is an arid land, and desert is an arid land where where the water is lost through where the water is lost through evaporation, then it is gained through precipitation. देन आप ये वाला यूज करेंगे. देन इसका मतलब ये है कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा. इवेपोरेशन इज मच मोर देन योर प्रेसिपिटेशन. कितना प्रेसिपिटेशन हो सकता है यहाँ का? लेस देन 50. 25 से कहीं कहीं लेस देन 25, कहीं से लेस देन 50 सेंटीमीटर. दिस इज द कंडीशन. ठीक है. Write down. It is a region where the rate of evaporation is higher, so that of the rate of precipitation. So that of the rate of precipitation. Simply लिखिए, the rate of evaporation is much higher than the rate of precipitation. Simple. The rate of evaporation is higher than precipitation. Then write down Thar Desert. Heading डालेंगे Thar Desert. ये Indian desert का एक general flow था. Thar Desert आप heading डालिए. It is a low latitude desert, and it is also known as, it is a low latitude desert, and it is also known as tropical desert. It is a low latitude desert, and it is also known as tropical desert. Basically tropical में नहीं, किस में आना चाहिए? ट्रॉपिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्यों? 5 to 20 क्या बात कर रहे हो आप? 23 डिग्री से तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या पास हो रहा है? राजस्थान उसके ऊपर ही है. कुछ एरिया आता है. हाँ, कुछ एरिया आता है. हाँ, कुछ एरिया आता है. करेक्ट. राइट डाउन. राइट डाउन. Thar is derived from thul. Thar is derived from the word thul, which means region sand ridges. Region sand ridges. देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है. अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है यहाँ पे आपका राजस्थान. दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है. ये जो पास हो रहा है इसके ऊपर आपका ये राजस्थान है. कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है तो आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए. तनिष्का इज सेइंग सब ट्रॉपिकल.
कितने लोगों को डाउट्स है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल्स में? व्हाट इज योर ट्रॉपिकल एरिया? कौन से एरिया तक ट्रॉपिकल है? तो आपका बेसिकली 35 डिग्री से योर 30 डिग्री से यू हैव योर अप टू 40 डिग्री आपका सब ट्रॉपिकल। कहीं कहीं इट कैन वेरी, ठीक है, कहीं कहीं 35 होगा, कहीं कहीं 40 होगा, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपका मेडिटेरियन जो आपका क्लाइमेट है विच इज अ सब ट्रॉपिकल फिनोमिना, क्या है उसका लैटिट्यूड्स? क्या हो गया है सबको? ये देखो, ये आपका इक्वेटर है, दिस इज योर 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा एरिया हो जाएगा ये वाला? ट्रॉपिकल्स। इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल। 23 से लेकर कहीं कहीं 35, कहीं कहीं 40। आगे समझ। अब राइट डाउन नेक्स्ट। The Thar Desert is a large arid region that covers an area of, it's a large region which covers an area of 2 lakh square kilometer. 2 lakh square kilometer. It is the ninth largest subtropical desert. It is the ninth largest subtropical desert. It is the ninth largest subtropical desert. Full stop. It is bordered by plains of Indus River. It is bordered by plains of Indus River to the west. It is bordered by plains of Indus River to the west, comma, Punjab plain to the north and northeast, Punjab plain to the north and northeast, comma, Aravalli range to the southeast, and run of Kutch, run of Kutch to the south. Full stop. More than 60% of the desert lies in Rajasthan. More than 60% of the desert lies in Rajasthan. Write down the land surface of the Thar Desert. The land surface of the Thar Desert is wind deposit accumulation, is the wind deposit accumulation of sand over 1.8 million years. It's a very big, huge time, like big time, 1.8 million years ka period. Write down. Its surface has high and low sand dunes. This is also the characteristics. Please underline, it has low and high sand dunes. Separated by sandy plains and
low barren hills and low barren hills. Full stop. The dunes are in continual shapes. The dunes are in continual motion and keep varying keep varying in shapes and sizes. In shapes and sizes. Okay. The region has saline lake beds. इनको क्या बोलते हैं saline lake beds? So you also call it as pialas. Saline lake bed, ब्रैकेट में लिखेंगे pialas. Locally known as dhans. Dhands. Right. Next point. The Sambhar, Didwana. Sambhar is Sambhar, Sambhar, Didwana, Khada Gouda are major sources of common salt. Next point लिखेंगे. It receives the low rainfall. It receives the low rainfall of about 4 inches in the west to 20 inches in the east. To the 20 inches in the east. 4 inches in the west to 20 inches in the east. Write down. The flora includes stunted scrubs. Although we are writing the physiography, but we have to write few of the points if you never know. हम vegetation में वैसे ही पार्ट कवर करेंगे in detail. ठीक है? The flora includes the stunted scrubs, drought-resistant trees, khejri, Chejri, khejri, jojoba, Jojoba. That's it. Now, apart from the Thar Desert, we also have the cold desert of India. Where it is? In Ladakh. Write down the cold desert. Bracket में लिखेंगे Ladakh. Write down. Ladakh is the cold desert of India. Ladakh is the cold desert of India that lies in the Greater Himalaya. That lies in the Greater Himalaya on the eastern side of Jammu and Kashmir. On the eastern side of Jammu and Kashmir. Full stop. It is bounded by Karakoram Range. It is bounded by Karakoram Range in the north and Jhanskar Mountains in the south. And Jhanskar Mountain in the south. Full stop. River Indus flows from Ladakh. River Indus flows from Ladakh. कैसा होता है यहाँ पे हीट इंटेंसिटी इज टू हाई राइट सन रेज आर टू हाई जब आप लद्दाख जाते हैं तो यू फील लॉट ऑफ हीट आपको गर्मी लगती नॉट गर्मी बट धूप पड़ती डायरेक्टली इंसोलेशन इज वेरी वेरी हाई सो राइट डाउन लद्दाख हैज अ वेरी थिन एयर
and therefore sun's heat intensity is strongly felt. Therefore, sun's heat intensity is strongly felt. Right? Again, same thing. The region has sparse vegetation. The region has ब्रैकेट में लिख सकते हैं scanty patches of scrubs, grasses. That's it. The topic is done. If you have any doubt, just let me know. You can ask. You can refer to the map. Physiography का देख सकते हैं आप. फिजियोग्राफी में फॉर एग्जांपल और कोई पॉइंट ऐड करना है कि shall I give you the this question, that what kind of question has come from physiography? Oh, I have given you the syllabus. This here I have a syllabus with me. Why it has not been uploaded? I don't understand. ये रहा आपका. The physiographic regions are done now, and Soumya, please take the recorded lectures so that you can keep a pace. Okay. क्या है आप लोगों का this thing? Physical, no? Settings. No, it's okay. PVQ, no? Write down, explain the topographical. ये आपका CSE 2013 को क्वेश्चन है. Explain the topographical and structural characteristics of Shivalik ranges. Write down. Next question. CSE 2009 question. Distinguish between what is the next. Acha. So I'm thinking of drainage as of now. Yes, I'm thinking of drainage only. So structure and relief has been done. Your physiographic regions has been done. So next is your drainage systems. Or do you want to do climatology, this Indian mechanism of Indian monsoons and rainfall patterns? आप बताइए. Rainfall patterns करना है. Done. Class, shall I go with the tropical side, this mechanism of Indian monsoon and rainfall patterns? Okay. Done. ठीक है. लिखा आपने distinguish between west and east coast
जैसे आपने क्वेश्चन किया हुआ है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू क्वेश्चन आपका 2009 में भी आया था. इन टर्म्स ऑफ देयर एवोल्यूशन, कॉमा, प्रेजेंट टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज पैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच हैज कम इन 2012. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर and characteristics. Explain the structure and characteristics of Deccan Plateau. This has come in 2013. इतना ठीक है. अब आपकी, you have to enjoy Diwali also. I know. ठीक है. All right. अच्छा हाँ, ले लो आप. सिलेबस आपको मिल गया राहुल? सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी. People who come in the class can take this PDFs या printed आप लिख सकते हो. सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पूरा, your paper 2 पूरा entire syllabus. जो क्लास में है, you can take this from me. Otherwise, I'll get it uploaded on the portal. ठीक है? Okay, done. Thank you so much, class. हाँ. जो क्वेश्चन आया था इवन द कॉपन स्कीम ऑन द क्लाइमेट चेंज, तो ऐसे जो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो स्कॉलर्स हैं उनको वो लोग इंडियन के पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं क्योंकि कॉपन स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया तो कॉपन का है ना, उसे इंडिया का रीजनलाइजेशन किया था. तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से उन्होंने किया था. और स्कॉलर्स का भी पूछ सकते नहीं नहीं, सिर्फ कॉपन जो है इम्पोर्टेंट उनका ही करेंगे. सबका ऐसे तो इंटायर में कितने लोग होंगे जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी पे दे वुड हैव वर्कड. थैंक यू सो मच.